Dear friends, hope all of you are fine and enjoying the opening up of public spheres and institutions. Unfortunately, as soon as the world started being freed of the pandemic and we thought that it would turn into a better place, the human capriciousness resurfaced. With the receding virus, the greatest threat to the world, the greedy biped known as man, launched its wars on fellow human beings. The greed to corner the material resources of this world has always led to wars and rapine. All of us are probably aware regarding the human cost of war which is being fought between fellow human beings. And history is witness to the fact that more human lives have been lost due to internecine wars than any virus could ever kill. Hopefully, soon, like the COVID pandemic, the war being fought between Ukrainians and Russians too would subside and we would learn to live peacefully. In our country, this opening up of our institutions is accompanied by renewed threats to our educational system and an onslaught on our history syllabus. The knowledge gained painstakingly through researches conducted in the last 70 years or so is being brushed aside. And endeavors are being made to replace all that with the crap which our colonial masters had circulated to divide us, fragment us, and rule over us. The fault lines of caste and religion are being sharpened, and a majoritarianism is being tried to be imposed. And that is why we at Aligarh Society of History and Archaeology, that is ASHA, and Ganga Jamni, have been trying to go against the wind and trying to put forward a view which is an anathema to the present day communal forces. Our fight is not only against any one group. We stand against the communal interpretations of both the sides. To us, Hindu communalism is as bad as the Muslim communalism. We stand against imperialism of any kind and condemn with equal vehemence whether it is the violation of human rights in Palestine or Ukraine, the streets of Cow Belt in India, or the tribal regions of Pakistan. We condemn the bomb attacks on the Shias of Pakistan, as well as the attempts to stamp out the minority and Dalit cultures in India. As discussed again and again, week after week in our live programs since the last 2 years or so, we have endeavored to put forward a scientific and secular approach using which one has to look at our shared past, shorn of all religious, regional, and sectarian biases. We believe that understanding our past as it was, with all its warts and blemishes, would help us form a better future. We believe that our subcontinent is a cauldron in which a shared khichdi has been prepared and it exudes all the myriad flavors
which went to make it. Today, too, we are going to serve you a same type of a recipe. In spite of all the mayhem caused by the partition and the division of not only our country but our region on the basis of religion, we have a situation when the shared spirit of yore is still visible. Yes, Punjab was brutally bifurcated into a Muslim Punjab and an Indian Punjab. I am using these terms deliberately. Pakistan was created in the name of Islam. Gandhiji, Nehru, Patel, and others within the Congress ensured that the independent India, on the other hand, would not be based on any religion. B.R. Ambedkar and the constitution framers wrote a constitution, our Indian constitution, which was secular with equal rights for all. And theoretically, that is what we are today. Today, Dr. Yogesh Snehi is going to discuss why, in, in spite of all the mayhem which partition caused and all the killings of Muslims in Indian Punjab and Sikh and Hindu massacres in western part, which came to be part of Pakistan, the shared heritage on the Indian side persists. In spite of the migration of the Muslim population of East Punjab to West Punjab and abandonment of their homes and sacred spaces, the dargahs and khanqahs continue to persist. Dr. Snehi will today explore the how and why the Muslim practices here were replaced with non-Muslim sacred practice of Sufi saint shrines in the pre- and post-partition contexts in the Punjab. But before that, let me give a brief introduction to Dr. Snehi himself for the benefit of the young audience which we have here today. Yogesh Snehi teaches history at the School of Liberal Studies, Ambedkar University, Delhi. Previously, he was a fellow at the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, that is between 2013 and 15. And it is there that I had the good fortune to meet him and hear him on this very theme which we are going to discuss today. I met him during the course of an international seminar held between 12th and 14th of October on religion and social diversity in South Asia. Dr. Snehi's major teaching and research interests focus on Punjab and debates on popular religion and its practice. Through a Tasveer Ghar fellowship, which he got for in 2010-11, he created a digital repository of images for Heidelberg Icon, image and multimedia database for Heidelberg University. These days, he is also related to an interesting project on the Qasbas. I mean the Abohar Qasba project, which is trying to make a study of small town cultures and histories. One of his books is specializing popular Sufi shrines in Punjab, dreams, memories, and territoriality, which was co-published
by the Indian Institute of Advanced Study, Shimla, and Routledge at Delhi. It was published in 2019, and probably it is on this work that he is going to base his talk. This book attempts to analyze the growth and development of a popular culture in post-partition Indian Punjab. It not only explores the organic lives of the popular Muslim Sufi shrines in a predominantly Hindu and Sikh Punjab, but also grapples with the question as to how, in spite of political and religious divides, the popular practices reconfigured themselves in the post-partition era. Incidentally, I had once reviewed this work for one of the issues of our journal, Studies in People's History, which was published in 2020. Now, with these words, I would like to welcome Dr. Professor Snehi, that he should come over and talk to us about the theme which I have just mentioned. Over to you, Dr. Snehi. Thank you very much, Professor Nadeem, for a kind introduction. And I'm so glad to be speaking here and sharing some of my thoughts, which you have very nicely underlined and framed. ये जो काम मैं करता रहा हूँ पिछले अंदाजन 15 साल से, this work was an accident, and I keep saying this was an accident because मेरी पहली जो टीचिंग असाइनमेंट थी वो मेरे होम टाउन में थी किस्मत से। तो वहाँ पर बच्चों को जब मैं एमए में मिडिवल इंडिया पढ़ा रहा था, तो बहुत साल मैं अबोहर में सिर्फ बचपन में ही रहा था। तो उनको पढ़ाने के सिलसिले में मैं एक पास की श्राइन में ले गया, क्योंकि बच्चों ने ही डिमांड किया था, है ना, मैंने नहीं कहा था उन्हें। तो वो ईयर था 2005, और उस साल जब मैं उस श्राइन पे गया तो मैं अपने टीचर के साथ बड़ा उत्साह में, क्योंकि नया नया टीचर बना था, तो बड़े उत्साह में मैं अपने टीचर जो थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनके साथ नोट्स शेयर करता हूँ कि देखिए मैं यहाँ गया और एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस मुझे दिखी है, जिसको वहाँ दरगाह कहते हैं, खानका कहते हैं, और वहाँ पर 5 कब्रें हैं और उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, खुली कब्रें हैं, खुले आसमान के नीचे वो कब्रें हैं। और बहुत बड़े, क्योंकि मैंने जब विटनेस किया था उसको, उन दिनों में वहाँ एक बड़ा मेला चल रहा था। तो उस मेले में मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मेला नहीं देखा था, जो उस दरगाह जिसको पंजपीर दरगाह कहते हैं, वहां पर लगभग मतलब आप जहां नजर घुमाएंगे वहां आपको भीड़ और लोग उमड़ते हुए दिखेंगे। तो उस पर कुछ नोट्स मैंने अपने टीचर से शेयर किए थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मुझे कहा इसके बारे में और पढ़ो और लिखो। वो एक्चुअली वाज द पॉइंट व्हेन द बुक स्टार्टेड। तो उनकी एक एडिटेड वॉल्यूम में सूफीज़्म इन पंजाब मैंने एक आर्टिकल कंट्रीब्यूट किया, और फिर वो एक लंबी जर्नी बन गई, क्योंकि 2006 में जब मैं अमृतसर गया, there I came across the vibrant culture of Sufi saint worship and Sufi saint veneration in the walled city of Amritsar. अब ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं हर टॉक में अपनी जरूर ये बात कहता हूँ कि लगभग एक दो साल के विदिन आई स्टार्टेड विटनेसिंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अदर थिंग्स, जैसे कि कुछ तो थी, जैसे श्राइन्स मैं बता रहा हूँ, रोड साइड श्राइन्स हैं, बट लगभग 2008 में वहां पर एक उर्स सेलिब्रेट हो रहा था, और जिस जगह पे वो सेलिब्रेट हो रहा था वो गोल्डन टेम्पल से ज्यादा यूं कहिए 100-200 मीटर दूरी पे है। तो मैं इस बात से बड़ा हैरान हुआ था उस वक्त जब नया नया मैं अमृतसर गया था। इंटरेस्टिंगली मैं पंजाब में रहते हुए कभी अमृतसर ही नहीं गया था। मेरा रिश्ता जो था पंजाब की पेरिफेरी से था, और जिस कल्चरल जोन से मैं बिलोंग करता था उसमें मेन स्ट्रीम जिसको आप पंजाब कहते हैं वो उससे बहुत दूर था, क्योंकि वो बॉर्डर जोन था, वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे था, वो हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे था। मेरे लिए वो बहुत नायाब चीज थी, क्योंकि जिस लेंस से मुझे पंजाब पढ़ाया गया था पंजाब यूनिवर्सिटी में, और जिस तरह की किताबें पंजाब पे उस समय लिखी जा रही थी, उनमें कहीं पर भी जो प्री पार्टीशन पंजाब था उसका रिफ्लेक्शन नहीं था।
तो वो दौर बहुत डिफरेंट था कि आप ऐसी स्पेस में रह रहे हैं जहां पर आपकी इमेजिनेशन जो है हिस्टोरियोग्राफिकली उसमें एक खास तरह की, जिसको हम डेमोग्राफिक डोमिनेंस है, उसको दर्शाता हुआ देखते थे। तो ये मेरे लिए एक हिस्टोरियोग्राफिक प्रॉब्लम भी बन गया कि ये क्या है, मतलब हाउ डू यू अंडरस्टैंड, और ऐसा क्यों है कि अमृतसर में कोई भी पंजाबी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है, सिर्फ कश्मीरी जो बुनकर हैं उनको छोड़कर आपको मुसलमानों की कोई तादाद नहीं है, तो ये उर्स बना कौन रहे हैं। तो एक हिस्टोरियोग्राफिक प्रॉब्लम को लेते हुए मैं कई सालों तक इस पे काम किया, और लगभग यूं कहिए 10-12 साल काम करने के बाद तो जो प्रोफेसर नदीम कह रहे थे वो किताब जो है मैं पब्लिश कर पाया, रिसर्च उस पर कर पाया। तो उसी से ही उसी के इर्द गिर्द ही मैं आज कुछ आपसे बात शेयर करूंगा। कुछ शायद हो सकता है मैं पढ़ के सुनाऊं, जो तो मैं टाइम ज्यादा कंज्यूम कर लेता हूं। तो हिस्टोरियोग्राफी प्रॉब्लम ये है कि ऐसा क्या है कि आपके पास एक पोस्ट पार्टीशन इंडिया के अंदर, पोस्ट पार्टीशन पंजाब के अंदर, जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन नेग्लिजिबल है, यानी आप मलेरकोटला चले जाएं, सिर्फ वही पंजाबी मुस्लिम आपको पंजाब में जो एरिया है वहां पर आपको दिखेगा, मलेरकोटला मुस्लिम चोज टू स्टे इन इंडिया। तो ऐसा क्या कारण है कि एक, पुरानी जो दरगाहें हैं, पुरानी जो खानकाएं हैं, पुरानी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो परसिस्ट करते हैं, और दो, नए इंस्टीट्यूशंस क्यों बन रहे हैं। क्योंकि सवाल वहां पर खत्म नहीं होता था कि पुराने जो दरगाहें थी, प्री पार्टीशन दरगाहें थी, दे कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। नो, आई केम अक्रॉस एक्चुअली येट अनदर कॉम्प्लेक्स डायमेंशन ऑफ न्यूअर श्राइन्स कमिंग अप, तो दैट मेड मी मोर intrigued by and therefore as a historiography question it became even more complex, है ना। मतलब क्योंकि बहुत सारी ऐसी, आप जानते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी में पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जब हम देखते हैं तो श्राइन्स के पीछे मतलब आप कहते हैं ना वो मनी और कई सारे फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं ना, कि क्योंकि वहाँ श्रद्धालु आते हैं तो उसको सस्टेन करना पॉसिबल है। तो आप पॉलिटिकल इकोनॉमी एंगल से देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बातें कह दी जाती है कि नहीं ये तो चलिए दुकान है ना, मतलब कमाई की दुकान है। बट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे न्यू श्राइन्स का इमर्जेंस, जिसके लिए कोई दुकान नहीं है, जिसको इमेजिनरी दुकान नहीं है, पर आप उसके इमर्जेंस को कैसे समझेंगे, ये मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरियोग्राफिक प्रॉब्लम बन गया। इसी से जुड़ी थी हरजोत रॉय की कई सारी आर्ग्यूमेंट्स जिनसे मैं खुद भी जूझ रहा था, जिनमें वो प्री पार्टीशन पंजाब में जो पॉपुलर सूफी सेंट वेनरेशन है उसके ऊपर काफी बातें करते हैं। बट वंस अगेन पोस्ट पार्टीशन पे जब आप आएंगे, जिसमें नई तरह की श्राइन बन रही हैं, उनको एक्सप्लेन करने का उनके पास टूल्स नहीं था। तो वो टूल जो थे मुझे इजाद करने पड़े, और इस टूल्स को इजाद करने के दौरान ही मैं समझ पाया कि सूफी सेंट वेनरेशन इज नॉट जस्ट हिंदू विजिटेशन ऑफ श्राइन। हाँ, मतलब होता है ना कि हम कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख जो है अपनी अपनी सो कॉल्ड सेक्रेड इंस्टीट्यूशंस के अलावा और रिलीजियस इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, कई कारणों से जाते हैं, है ना। हम उसके पीछे बरकत ढूंढ लेते हैं, हम कई तरह के नॉमेनक्लेचर्स यूज करते हैं। तो सिखों में जैसे देवी माताओं के पास जाने की परंपरा है, पर जब हम विजिटेशन की बात करते हैं तो हम उसको जस्टिफाई कर देते हैं, पर जब ओनरशिप की बात आएगी तब हमारे पास जो है समझ जो है वो ये होती है कि इस सूफी श्राइन जो है उन पे मुस्लिम सदर नशीन या उनके केयर टेकर या खलीफा वो उसको रन करते, आने वाले उनके श्रद्धालु जो है वो नॉन मुस्लिम है ना। मतलब फ्रेमवर्क जो है उस तरह से कभी कभी पेश किया जाता है। बट मेरे फील्ड सर्वे में मैंने पाया, and this was the most fascinating component of what I started learning and doing, I came across shrines which were pre-partition shrines which were always managed by non-Muslims, which means they were always non-Muslim owned shrines from the times of their establishment. And they were not just new shrines, by the way. The shrine that I came across in Moga, say for instance, that shrine was more than 300-year-old, roughly around more than 300-year-old. The shrines that I came across in nearby my hometown, which were known as Pir Khanas, a lot of them were pre-partition shrines from the late 19th century. So that actually once again created a huge historiographical problem for me, because the received ways in which we were understanding, we had tried to comprehend the working and functions of shrine, that is not what I am now witnessing. And therefore this entire study became far more complex and fascinating for me. तो मैं कुछ हिस्सा जो है इसका पढ़ देता हूँ, नहीं तो I may actually go across the time limit.
so that the sanity of the talk also, sanctity of the talk on time also remains. Popular Sufi shrines in the Indian Punjab continue to flourish in a predominantly non Muslim landscape and embody a living memory of pre partition past. To a tutored eye, they may stand out as anomalies in a largely non Muslim landscape. However, with diverse populations participating in these eclectic religious rituals at popular Sufi shrines, also represent one of the most dynamic forms of religious activity in Punjab today. और ये बात emphasize करने की ज़रूरत है कि irrespective of the fact कि पार्टीशन पंजाब को completely demographically transform कर देता है, खासतौर पर इंडियन पंजाब को एंड पाकिस्तान पंजाब को, पर आपको सूफी सेंट श्राइन्स आज भी हर एक गांव, हर एक कस्बे, हर एक बड़े शहर, छोटे शहर, सब जगह आपको सूफी श्राइन्स मिलती हैं. ऐसा शायद कोई ही गांव होगा पंजाब का जहां पर कोई भी छोटी सी ही सही एक सूफी सेंट श्राइन ना हो. So that the spectrum therefore is very large, and we are not talking about कि ये शहरों में या कुछ खास कस्बों के अंदर श्राइन्स है, नहीं. Their spectrum, their spread, their horizontal spread is very, very large. However, with diverse populations participating in these eclectic religious rituals, Sufi saint shrines also represent one of the most dynamic form of religious activity in Punjab today. But how do we understand continuities and change at Sufi shrines in the post-partition Punjab, particularly in the absence of Muslim caretakers? This process has been explained through terms like Islamization, Islamic acculturation, purification, or even syncretism. Central to the imagination of all these terms is aberration of a standard norm. Richard M. Eaton, while trying to problematize our understanding of the term Islamization, argues for a diffusion of Islam, even if slow, as a complete transition from one religion to the other. This definitive connotation associated with the term Islamization does not help us explain the complex ways in which religious association was constructed and sustained. In his earlier essay on popular perception of the shrine of Baba Farid, Eaton investigates the question of bayat, where he interestingly uses the term initiation, through which a devotee was formally accepted as a disciple of the shrine, a ceremony possibly borrowed from Hindu-Buddhist initiatory practices. Bayat destabilizes the prevalent norms, notions of conversion and Islamization by vernacularizing the process and practice, but does not say anything about the association of non-Muslim devotees to the shrine who might have not converted but nevertheless remained initiated, and I'm emphasizing here initiation, disciples of Baba Farid. On the Starbandi ceremony, Eaton discounts the presence of significant Hindu men who participate out of respect for a local institution of great repute, and perhaps also out of a sense of civic responsibility, and I'm quoting Eaton here, but not out of association or devotion to the shrine. The distancing of non-Muslim presence from debate around Islamization, and in Eaton's case, Islam spread among the ordinary peasants of Punjab, does not help us chart the differential ways in which religious processes penetrate ordinary lives. This trope of conversion derives from an understanding of conversion as a linear progression, reminiscent of Christian Protestant evangelical formulations. Like Eaton, who argues for understanding of conversion as gradual and iterative, Ishita Dubey and also suggests a reimagination of conversion, less as unremitting rupture and more as fashioning of novel practices, beliefs, identities, visions, boundaries of discrete religiosities. Still, while these formulations reject the idea of conversion as a fundamental rupture, they do identify a definitive and dominant process of religious change. The continued existence of pre-1947 memory of Sufi saint veneration in a largely non-Muslim population, an emergence of new spectrum of popular Sufi shrines in contemporary Punjab cannot possibly be explained through terms like Islamization. Here, conversion is not a definitive ideal. Dominic Silla Khan's positioning of evolving religious identities as being on the threshold
can be one of the crucial way for an understanding of popular Sufi shrines, where identities are constantly in the process of becoming. I remain wary of ascribing definitive values to popular shrines, either as abodes of peace or spectacles of antagonism, discourses that are informed by identitarian politics. Shrines are archives of everyday, a mirror to understand the complex reciprocity, contestation, and dissent of dominant discourses. This complexity cannot be understood by presupposing syncretism or conflict. A typical Sufi shrine in Punjab comprises of a dargah, a cenotaph built around and above the grave of a mystic, and in some cases an adjacent mosque or a langar khana or the community kitchen. While many shrines, depending on the spiritual affiliation, have some restriction on the entry of women inside the sanctum, no such restriction exists in Punjab except for the shrines of the Orthodox Naqshbandi Sufi Sheikh Ahmed Sarhindi. Every Thursday remain an important day to offer dua at the shrine. Longer celebrations are held during Urs, the death anniversary of the Sufi saint, the duration of which varies from one day to almost a week. Urs is usually accompanied by sama and kavali and continuous langar. In Punjab, Urs is also accompanied by a feast, an occasion for enjoyment and celebration. In rural shrines, such occasions also attract folk musicians and performers who sing the popular narrative from the life of the patron saint. Wrestling tournaments are organized at several shrines. While Dargah constitutes the core of the shrine practices, the periphery is marked by a diversity of intermediaries and ritual performances like possession. In the 21st century, Indian Punjab has experienced a resurgence of the practice of saint veneration through complex processes of dreams, memory, circulation of images, and acculturation. The region has also begun to particularly consolidate the influence of the Chishti Sabari tradition and its expression in the urban and rural landscape. It seems significant to understand why popular shrines have found a renewed visible expression in contemporary religious landscape of Punjab, and whether these can be understood through abstractions of the meta-narrative of Islamization. Rahmat Tarikare beautifully illustrates this point through a case study of Muharram celebrations that take place in Mudgal in Karnataka. And I quote, "The climax of these celebrations is the coming to face of Hassan and Hussein. Hassan and Hussein are represented by two silver torches. They are decorated with colorful cloth and flowers and made into gods. To see this rendezvous, which lasts for just a second, about a lakh of people of this region stand faithfully at the gates of the Mudgal fort and wait. In terms of caste and creed, these people consist of Bedaru hunters, Dalits, Kurubas, shepherds, Lingayat, and some Muslims. On being questioned about this encounter, people narrate an interesting story. It's a quote within the quote. Hassan and Hussein, wandering from Arabia, arrived in Mudgal. The younger brother Hussein entered the town admiring its beauty. The elder brother Hassan went outside the town admiring the beauty of the fort. By that time, it was evening and the fort gates were closed, so the younger brother had to stay inside and the elder brother outside the town. Thus, the two brothers were separated and brought together for an encounter once every year. Here, historical formulation is easily broken down by the world of faith and the epic of war of the 7th century, which took place in the fields of Karbala village, gets transformed into the hands of communities of various religions in India and underwent astonishing transformation. Hassan Hussein had come to Mudgal as the sons of the soil. However, interestingly, on the contrary, when we look at Pakistan today, Jurgen Wasim, an anthropologist, a known anthropologist from Germany, reports how in contemporary religious debates in Pakistan since 2002, Taliban has burned down cinemas, shops in which cassettes and music films are sold, forbidden music and dance and weddings, attacked musicians and even killed them, forcing many vocalists from the northwest frontier to migrate to Punjab. Even Lahore has not been spared, and we have a long list of Sufi saint shrines, their tombs, and their festivals which have been bombed. The shrines of most important Sufi saints of Lahore have also been bombed in the process.
It will be curious, therefore, to know how music survives in popular shrines in both Western and Eastern Punjab. This stated one fundamental question about the evolution of religious traditions, and I'm skipping some part and coming down to the main point of discussion here. And these are these two set of case studies I want to share with you today. The first case study actually comes from, as I was saying earlier, from a village called Langiana, which is close to the village of Jarnail Singh Bhindrawala. So the place is interesting. And the shrine is known as Nigaha of Baba Lakhdata. Also known as Nigaha, village Langiana, due to its location of the shrine of Baba Lakhdata or the bestower of lakhs, is an obscure saint of mixed Suravarti and Chishti lineage, is an important shrine in South, who has the most important shrine in, this is the most important shrine in the southwest Indian Punjab. There are four major Nigahas in the historic Punjab region. Most important shrines dedicated to Baba Lakhdata are located in Nigaha, at the edge of Suleiman Mountains in frontier Dera Ghazi Khan, and at Tonkal, in Punjabi called Tonkal, but Dhonkal in Gujranwala, both in Pakistan. Una's Chota Nigaha in Himachal Pradesh now occupies the prominent place among the shrines in India. And as I can show you, I'm referring to, this is actually the photograph of the Una Nigaha in Himachal. Dedicated to Baba Lakhdata, these shrines constitute a wide network of sacred centers that are now transnational, yet at the same time embedded in the regional and local settings. Lacking any formal hagiographic accounts, Baba Lakhdata's popular lore traverses the landscape of Punjab through folklore, popular saint hagiographies, and bardic compositions sung at numerous fairs and festivals set across pre-partition Punjab. Known by several other names like Sakhi Sarwar Sultan, Peer Nigaha, or Rohiawala and Lallawala Peer, this miracle saint had an extraordinarily large following. His followers could be affiliated to their former religious identities as Sikhs, Muslims, Hindus, or Christians, but preferred to be accounted as Sarwariyas in colonial census. Sikh literati offered a strong resistance to Sikh veneration of Sakhi Sarwar. In 1896, Gyani Dit Singh, an important intellectual of the Singh Sabha movement, censored the popular veneration of Sikh Sarwar through a Punjabi tract where he argued the futility of saint veneration for curing illness through miracles. In the post-partition Pakistan and India, veneration of Sakhi Sarwar has been violently resisted by bombing of major shrines in Dera Ghazi Khan that killed more than 50 people during Urs celebrations, or killing of the caretaker at Nigaha in Langiana in Indian Punjab, the Moga place that I'm talking about. Shrines dedicated to Sakhi Sarwar have always thrived on local networks of patronage and therefore poses challenges to reformers and religious radicals. Harjot Oberoi notes that to wean worshippers away from Sakhi Sarwar must have been very difficult, for he was believed to possess ample supernatural power to reward his adherents without demanding much in return. Faith in him imposed hardly any restrictions on food, dress, or social behavior. Free of doctrinal dogma and with no stringent requirements of ritual purity, worship of Sakhi Sarwar enjoyed ample votaries. Nigaha at Langiana should be situated in these pre-partition networks of shrines dedicated to Baba Lakhdata. One of the oldest in Punjab, plains of Punjab, this Nigaha is supposedly 250-year-old and is said to have been built by Baba Lakhdata himself. The latter claim is historically incoherent because Sakhi Sarwar lived in the 13th century, but the saint narratives have often remained connected across time and space through dreams and visions. Thus, even while a majority of Nigahas in Punjab are memorial shrines, many constructed post-partition, they may still be endowed by Barkat of Sakhi Sarwar. Nigaha at Langiana has special place in the hierarchy of these shrines, since it is apparently directly bestowed by the saint's visit and Barkat. Contemporary memorialization of the practice of saint veneration are thus significant examples of living sites of memory that transcend Barkat across space and time. Hardeep Soni,
whom I interviewed, who visited quite often, explains the circumstances that led to the establishment of this shrine. Their ancestors, Pir Buddhu, a Khatri, was blind and hence could not cultivate his agricultural land. He deeply wished that Baba Lakhdata, Pir Nigaha, restores his vision. Baba Lakhdata was incidentally traveling from Multan towards Sultanpur Lodi, and while passing through his village, through this village, wanted to find the correct direction. He asked Pir Buddhu for the way. Pir Buddhu expressed his inability to show Lakhdata the way to Sultanpur due to his blindness. Baba Lakhdata threw his green parna or the cloth tied to, as turban on Buddhu, and when the latter ran over his face, he gained his eyesight. In return, Baba Lakhdata asked Buddhu to establish a darbar for him. Buddhu pleaded that he possessed land but did not have money to construct the darbar. Baba Lakhdata told Buddhu that the son of a Sikh Sardar of Mansa was cursed with mental illness and, and it will only be cured by the latter. Their son was cured by Pir Buddhu, and as a result, the Mansa Sardars constructed the original darbar, which is now been expanded and large town hall constructed adjacent to the shrine. And you can see actually the next image. This is a large langar hall, very large. In fact, the shrine is a very small space, very small structure, but the langar hall is so large that one gets really fascinated by looking at it. The narrative of Sakhi Sarvar's travel from Multan to Sultanpur Lodi and performance of miracle of healing follows a reciprocatory template of barakat, piety, patronage, and sovereignty that has been extant in several other narratives and saint hagiographies elsewhere in India. Extension of his vilayat from west to east of Punjab also follows pattern of slow and gradual sedentarization of Jats, a process that was already complete by the end of the 17th century when the shrine was apparently established. Besides, the possibility of non-Muslim inheritance of shrines punctures the linear theories of Islamization that presupposes conversion and territorialization of sacred shrines. Also, scholars study Sufi shrines have explored notions of syncretism through visitation and pilgrimage, but have often ignored complex forms of inheritance, possibly due to narrow focus on major shrines, which have predominantly been enriched through networks of state patronage. However, structures of patronage mimic popular ideals of sovereignty, and therefore, rather than limiting an investigation of sovereignty and patronage to frameworks of state, it is important to explore the guiding spirit of popular notions of sovereignty and also patronage. Two major fairs are held at Sakhi Sarvar Shrine in Langiana every year, besides small fairs every Thursday. I'm just taking you to the next slide. Uh, every Thursday, the shrine draws pilgrims of diverse faith from across the region. And reference to these fairs actually come from several ethnographic accounts during the colonial era. And I'm leaving that part. Maybe I'll try to read it. It is interesting actually. And I'm quoting H.A. Rose here. It is called Nagaha Pir and was founded in 1869, Samvat, by a Patiala man. It contains no image but has a chabutra or a platform. The pujari is a Khatri and succession follows natural relationship. Another shrine of Sakhi Sarvar is at Nigaha, where a fair is held on the on Thursday of Fagan. It was founded some 200 years ago by the Sardar of Mansa, which I'm just referring to actually. So they constructed this shrine, and all Hindus and Mohammedans in this part are its votaries, offering its grain at each harvest. It also has a chabil where poor travelers drink water. At the fair, visitors are fed free. A Brahmin is employed as a pujari. Now it's interesting actually. A shrine which is dedicated to a Sufi saint, constructed by a Sikh Sardar, governed by a Khatri, Soni, and the ritual practice is performed by a pujari. So, what sense do you make of this shrine? And it's not a new shrine; it's an old shrine, almost like 250 to 300-year-old shrine. The seven generations of Sevadar of Nigaha, as mentioned by Rose,
belong to the clan of Khatris, and these are Hindu Khatris, who have been in continuous possession of the shrine since pre-partition times. Here is an example of popular Sufi shrine which was never under the ownership of Muslim caretakers. The conspicuous presence of Brahmin priest also mimics patterns of popular ritual hierarchy. Village Langiana is predominantly comprised of Khatri Sonnis, Jat, which are Brad Jat, and Mazhabis. Located in southwestern Indian Punjab, this region was inherited by several clans of. Hello. Located as southwestern Indian Punjab. The region was inherited by several clans of Sikh Jats. Both the Rajas of neighboring Faridkot and Kotkapura were Sidhu Brahds and gained important footing in the region by the 16th century. During the heydays of militancy in Punjab, militants gunned down Baba Mangat Rai here in 1987. The militants contended that Nigaha was a Muslim place of worship and wanted to destroy the Darbar. This violent contestation mimics Gyanidit Singh's late 19th century polemic against the veneration of Sakhi Sarwar. Rode, the village of Janel Singh Bhindrawala, is located nearby. Nevertheless, the scale of annual fairs as well as the shrine complex has grown over the years. When we first visited in January 2010 by me, the shrine complex comprised of a small darbar of Baba Laktata and another darbar for Baba Buddhu Shah. There were many shops selling souvenirs along the road leading to Nigah. In February 2015, the main shrine complex was being expanded and redone to accommodate increasing flow of pilgrims, subduing the late medieval structure of its historicity. A very large langar hall or the community kitchen now adorned the northern side of the shrine, approached through a large gateway, which I just showed you, adorned by two tall minarets and an arched gateway. Small exclusive shrines are now also dedicated to popular saints, usually associated with Baba Lakhdata, like Bhairu, Mata Masani, and Baba Khandoda. I don't know how much time I have. I can actually go on with the second case study also, and maybe skip out some part. You have time. You have time. Okay, Please go ahead. Okay. Now, Sakhi Sarwar's ubiquitous presence at almost all Sufi shrines and their urs endows special significance to the saint. He is a miracle maker, tamer of wild animals, curer of diseases, giver of sons, bestows his barakat on everyone irrespective of caste and religious identity. His folklore weaves narratives of his miracle and blessing to a Jat, Jatti, Brahmin, or a Khatri. He can disguise as a beggar or a trader. Harvinder Singh Bhatti, who is an anthropologist from Punjab University, Patiala, situates his ability to tame lions, his portrayal as innocent Pola, mischievous, true king or sultan, etc., within the contours of Indic sacred cosmologies, present him as an interesting figure. Therefore, among his companions are Mata Masani, goddess Sitla, whose veneration is linked to cure smallpox, and Bhairon, or the messenger of Sakhi Sarwar, who is also a Rudra, dreadful form of Shiva. Two most prevalent kismetic or fate-centric saint cults associated with miracle, power, and healing saint of Punjab. Sakhi Sarwar is thus one of the several liminal saints of medieval India who remains on the threshold of religious identity and critiques dominant discourses of religious boundaries in the Sikh and Hindu historiographies. Baba Lakhdata's Nigaha traverses diverse topographic contours from the plains of Indus to the submountain terrain of Gujranwala and Una, the hilly areas of Una, to semi-arid plains of Moga. It also counters contemporary notions of territoriality associated with nationalist histories, as well as limited identitarian discourses around Sufi shrines that usually associate and legitimize such shrines with Muslim caretakers. Here is an example of a shrine that had uninterrupted succession of Khatri caretakers only, and there has been no change in ritual performance at the shrine. So in this case, there is a shrine which has been unaffected by partition. The shrine's complex mimics symbols of Islamic architectural traditions, but the space continues to be vibrantly secular,
in its spatial dynamics. The miracle story around Baba Laktate and Buddhu does not involve any trope of conversion, and the miracle typology is instead interwoven with gift or the barakat of healing, recovery, and boon to heal. The circumstances associated with the establishment of shrine similarly involves a Hindu Khatri and a Sikh Jat through the agency of a Muslim saint. Now, quickly I'll share with you the second case study that I wanted to share, which is on the Peer Khanas of southern Punjab, southern Indian Punjab. The practice of constructing memorial shrines of saints known as Peer Khanas has been recorded by colonial ethnographers. Sakhi Sarwar, as the case study continues, and Haider Sheikh, popularly known as Sheikh Haider, popularly known as Haider Sheikh, continues to be one of the most important popular saints to be revered at Peer Khanas. Built on the boundaries of villages, Peer Khanas are 8 to 10 feet in each direction and covered with a dome with low minarets or pinnacles in each of the four corners. In front, there is usually a doorway which opens. I'm just kind of taking to the next slide. Actually, it's the site of what is inside the Peer Khana. In front, there is usually a doorway which opens outward to a plastered brick platform. Most such Peer Khanas are concentrated in the adjoining regions of Punjab, Haryana, and Rajasthan, and are managed by Agrawal Sabha, an organization of Hindu trading caste, usually classified as Baniyas. The majority of Peer Khanas emerged in the post-partition period as a continuation of tradition of venerating peers pre-partition. The Peer Khana understudy came up in the first decade of the 21st century at Abohar, and hence makes an interesting study of re-enchantment of these practices in recent times. And I'm actually sharing this narrative quickly. Baba Makhan Lal narrates that there was a tradition in his family to visit and pay thanksgiving to Sheikh Haider of Malerkotla, who died in the year 1515, at the birth of a son, occasion of a marriage, etc. Similarly, Dr. Darshan narrates that once his father had a pawn or a dream revelation, this is all post-partition narrative, of unconscious mistakes committed by his family, which led him into enormous economic difficulties. He adds that until 1940, his great-grandfather Kanmal was rich and prosperous businessman. But when his great-grandmother stopped worshipping peers and lighting chirag at nearby shrine, the family started to suffer losses and was reduced to penury for 3 years from the year 1958 to 60, which is immediately close to partition. Later, his father, Tirath Chand, who died in 2000 at the age of 78 years, restarted the practice of venerating peers. He narrated how he had a pawn, once again dream, when the Baba of Malerkotla asked him the reason for which his family stopped worshipping peers post-partition. In 2004, Master Shambhunath arrived at the house of Dr. Darshan Pal during a chonki. Now, chonki is actually a religious event. I don't know. Let me just show you the next. Yes, this is actually on the occasion of chonki. During a chonki or a religious event organized by Baba Kishan Lal of Rampura Phul, yet another small town mandi in close to Abohar, and offered a piece of land to establish a Peer Khana at Abohar. Punjabi Agrawal Sabha did not find the place suitable for establishing a Peer Khana since it was located in a Dalit colony. Later, after 2 years, Master Shambhu offered the same land once again, and on 17th May 2007, it was finally decided to establish Peer Khana at the same site. The chairperson of Shri Peer Khana Sabha, Abohar, says, and actually I'm just sharing with you announcement for one of the Mela that was organized early on. Shri Peer Khana Sabha Abohar says that in a span of 2 years since the establishment of the shrine, an amount of rupees 25 lakh had been spent on the expansion of Peer Khana. Baba Makhan Lal instructs his visitors according to their religious affiliations, apparently irrespective of caste and religious traditions. Dr. Darshan had been to Goddess Mata Chantapurni Shrine and the adjoining state of Himachal a day ago, and says that fakirs, holy person, don't recognize the barriers of religion. Every Thursday, he holds a Sanji Gaddi, literally common seat, at the Peer Khana. Besides him, Baba Harbans Lal Garg from Mandi Dabbawali
another a small town actually in Haryana. And Baba Suresh Kumar from Hanumangarh in Rajasthan also preside over Sanji Gaddi from time to time. Peer Khana has memorials of various peers, fakirs, and goddesses. In the center of the prayer hall, there is a shrine with a photograph of 6 popular saints. I just showed it to you. I'm taking it back on that slide. Uh, there are 2 memorial graves on either side of this shrine. On the left is a memorial grave for Sheikh Haider of Malerkotla and covered with blue chadar cloth. And on the right side is an enclosed grave of Baba Lakhdatta covered with green chadar. Besides, there are minor shrines dedicated to Mata Masani Khan Dodda Peer, who is believed to be the younger brother of Baba Lakhdatta, and Bhairo Chhadi, who is supposedly the Wazir, the minister of Baba Lakhdatta. Diyas, chirags are lit every day in the central shrine of Peer Khana, and Bhandara or Langar kitchen is organized every third Thursday. Weekly chowki is associated with bhajans, devotional songs, and bujhe suggestions. When asked about the resurgence of culture of peers in recent times, Baba Makhan Lal says, and I quote, "If a customer goes to the market to purchase things, she looks for the cheapest and most durable kifaiti store. Peer khanas are also more kifaiti centers for fulfillment of wishes." He had, unquote, he had been associated with RSS since 1984, but of lately has not been going to the meetings of it primarily because of association with the Peer Khana. Local members of the organization had objected to his association with peers and regarded it as inappropriate. Baba Makhan Lal chides away and says, now even some members of that organization come and resolve their financial and personal problems. Now I end this presentation by a small conclusion. Now here actually what I've tried to do is to use a lot of जो popular narratives हैं shrines के इर्द गिर्द उनकी जो meanings हैं, उनकी जो narratives हैं, उनसे क्या associations emerge करते हैं, क्या complex associations emerge करते हैं, वो थोड़े से मैंने share किए थे. One of the biggest limitation actually of working on such kind of shrines is complete absence of textual narratives. अब कुछ cases में, say for instance, colonial ethnography may provide some narratives around some shrines, but these are not exhaustive narratives. So the important question, therefore, is when we don't have huge plethora of literature available around these shrines, do we as historians stop working on these shrines? I would say rather no. In fact, this may seem as a bigger challenge to work on this shrine, and therefore use innovative tools of understanding and interpreting these shrines, but it's a worth enterprise. And therefore, non-availability of textual narrative should not be seen as the limitation in as far as the exploration of these shrines, saints, and practices, saint shrines and its practices. And I just conclude it by here saying that in the contours of historiography, though these shrines have long been peripheralized as a residue that lacked historiographical accounts or any other major documentary history of evidence, yet these stood sometimes lonely, often silent, and yet perhaps the only witness to the partition of Punjab in 1947. At the same time, shrine spaces are imbued with memories of decades, sometimes centuries of visitation, veneration, and association, both as a Custodian observer as well as guide to long stream of pilgrims and disciples. In the contour of post-partition contemporary Indian Punjab, therefore, popular Sufi shrines stand as the only testimony to the social contours of the spaces pre-partition. Religious radicals have made several violent attempts to erase these remnants of past, facilitating the electoral politics post-partition, a process of othering that has been very anxiously utilized to sustain the fragile nation states in contemporary South Asia. However, 21st century Indian Punjab has not only witnessed continuous existence but also emergence of a new set of Sufi shrines that have been established and sustained by non-Muslims. This fascinating feature of contemporary Punjab, exciting silently but significantly, had to be documented, and therefore I wrote this book. Thank you very much for this opportunity, and I look forward to question and answer session.
बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई थिंक Yogesh, it was beautiful listening to you about uh, the type of cultural space which has been created in a region which was a land of strife uh, some years back. I mean, in fact, there are a number of questions which arise uh, from the talk which you have delivered. Uh, if I remember correctly, uh, as I said in the beginning, you had given you know a lecture on this very theme uh, way back when we had first met at Shimla. And during the course of that lecture, you had added one more thing, which today uh, I found that you did not touch because the question which you were taking up today was very different from the question which you had raised at Shimla that day. What I remember from that day's presentation of yours is something on architecture of these places. Uh, चाहे वो सिख श्राइन हो, गुरुद्वारास हो, या वो सूफी दरगाह हो. आपने उस दिन जो स्लाइड्स दिखाए थे उसमें बहुत से पॉपुलर लेकिन बहुत स्मॉल श्राइन्स भी आपने दिखाए थे और देख के उसको डिसाइड करना मुश्किल था कि ये नॉन मुस्लिम स्पेसेस हैं या मुस्लिम स्पेसेस हैं. वो एस्पेक्ट भी आज हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है. इनफैक्ट अगर आप देखें कि जो एक दरगाह आपने आज भी जिसका नाम लिया, क्या नाम है उसका, शेख अहमद सरहिंदी. राइट. सरहिंद जो अब दूसरे नाम से जाना जाता है, a place where बंदा बहादुर was very active. अगर आप वहाँ जाके उसका इतिहास देखें तो एक ज़माने में सरहिंद was very important as a Sufi town. राइट. Later on, बंदा बहादुर के एक्शंस के बाद it got converted into a town of the Sikhs. फतेह साहिब या क्या नाम उसका, फतेहगढ़ साहिब. फतेहगढ़, with gurdwaras and whatnot coming up. In fact, if you go by popular legend, a lot of Muslim shrines and Muslim monuments were broken and done away with. राइट. एक ऐसी जगह रही जहाँ के ऊपर एक स्ट्राइक 1947 के आसपास नहीं बल्कि वो पहले से वो एक जगह एक रही जहाँ के ऊपर एक रिलीजियस स्ट्राइक आपको स्पेशली जो एक न्यूली ग्रोइंग पावर थी, पॉलिटिकल पावर भी थी, एक रिलीजियस एक वो भी था सिखिज्म, और एक पुरानी पावर इस्लाम, वो वहाँ के ऊपर नजर आया. लेकिन जो शेख अहमद सरहिंदी की दरगाह उसको तो बाद में रिबिल्ड किया गया. यस. यस. I mean, in fact, I visited it at 2-3 years back, and I was told क्योंकि ये I was expecting कि मैं पुरानी दरगाह देखूंगा, लेकिन I was told कि नहीं, वो एक श्रद्धालु ने ये बहुत नया नया इसे बनाया है, कोई सेठ उन्होंने उसको बनाया है. योगेश जी, I mean,
आपको क्या बताना, लेकिन पब्लिक को मैं बता रहा हूँ कि when we approached the Sufi shrine of Sheikh Ahmad Sarindi, मुझे ये लग रहा था कि मैं किसी गुरुद्वारे में एंटर कर रहा हूँ, है ना। नॉट ओनली इट्स आर्किटेक्चर बट द वेरी एम्बियंस ऑफ द राइट, है ना। बहुत सी उसमें सूफी प्रैक्टिसेस भी थी, लेकिन जिस टाइप से वहाँ का वजू खाना बना हुआ था, हॉल बना हुआ था, या जो मेन श्राइन है जिसके अंदर इस सेंट की ग्रेव, है ना, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे वाकई कोई एक सिख श्राइन है और इसका कोई मतलब मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं। जबकि and at that I would like to stress, जबकि शेख अहमद सरिंदी उन वाले सूफियों में से हैं कि जिनके यहाँ वंस अगेन स्ट्राइक का पहलू बहुत मिलता है। हम लोग तो कॉमन एस्पेक्ट्स की वो सूफियों से जो जोड़ते हैं कि जहाँ इश्क और लव, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन शेख अहमद सरिंदी के अगर मकतूबात देखे जाएं, मकतूबात इमाम रब्बानी, तो उसमें तो जिस टाइप के कमेंट्स हेट्रोडॉक्सी पे या नॉन मुस्लिम्स पे, वो मेरे ख्याल में सावरकर और जिन्ना को बड़े सूट करेंगे अगर वो लोग तो आजकल के लोगों को बड़ा सूट करेंगे। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, जो उनकी ही दरगाह में जिस टाइप से एक कल्चर उभर के आता है, राइट, कुछ चीजें जो चिश्ती दरगाहों की हैं, दोस्त प्रैक्टिसेस, एक चीज जो चिश्ती दरगाहों में और शेख अहमद के यहाँ जो मुझे कॉमन लगी, वो ये कि मेन जहाँ पे कब्र है वहाँ पे विमेन वर नॉट, यस, वेरी अनलाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द सिक्स श्राइन्स, है ना। मैं इसकी एक एग्जांपल बना रहा हूँ आपको। जाहिर है कि you gave two stories about two different aspects of Muslim shrines in Punjab, तो मैं उसमें एक थर्ड एस्पेक्ट उसमें जोड़ रहा राइट, हूँ कि उसी पंजाब में एक वो चीज जो कॉमन कल्चर को जिसके साथ जिसके नाम को नहीं जोड़ा जा सकता है, लेकिन अगर आज उसकी जगह में आप जाएंगे तो वहां पे जो जिसे हम नॉर्थ इंडिया में राइटली रॉन्गली गंगा जमनी तहसीब कहते हैं, वो आपको वहां के ऊपर एक चीज नजर आएगी। और एक चीज और जो इसमें मैं ऐड करता चलूं बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग अप क्वेश्चंस फ्रॉम a few questions which have been raised, that you know um, even the people who are visiting this shrine, in spite of the fact that in his maktubat he writes that to sit and have food with non-Muslims and Shias is like having food with dogs. But at least the time when I visited there were more Hindus and Sikhs than Muslims themselves. you're absolutely right, you're absolutely right, yes, जो हमारे उसको दिखाता है कि देखिए ये बॉर्डर है, यही वो पंजाब है कि जहाँ डिवीजन हुआ, यही वो पंजाब है जो एक वेस्ट पंजाब और ईस्ट पंजाब में डिवाइड हुआ, वही पंजाब है जहाँ मास्टर तारा सिंह और दूसरे लोगों ने वो किया, वही पंजाब है कि जहाँ के पंजाबियत जो पाकिस्तान में हुई वो हम आप सब जानते हैं। खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान उसी पंजाब को डिपिक्ट कर रही है, राइट, लेकिन उसी टेरिटरी में जिसका नाम भी बदल दिया जाता है और उसको सरहिंद नहीं बल्कि एक बंदा बहादुर के बाद एक सिख उससे जोड़ा जाता है, लेकिन जो अवाम का कल्चर वहां डेवलप हो गया उसमें मिक्सचर है पुराने कल्चर्स का, जिसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। सो आई थिंक दिस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन जो आज आपने विद योर एग्जांपल्स जो यहाँ पे रखा, आई थिंक दैट इज द नीड ऑफ द टाइम।
एक छोटा सा रिस्पॉन्स अगर मैं दे पाऊं, जी है ना, जी जी इंटरेस्टिंग जी आपने बात कही है। जी ये जो सरहिंद है बड़ा इंटरेस्टिंग टाउन है। मैंने इसको उर्स के दौरान कवर किया था, 3 दिन का उर्स लगता है वहां पर। तो अब साल एग्जैक्टली याद नहीं है, पर शायद 2007 की वो मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन है, उस पर छोटी सी फिल्म बनाई है मैंने। तो इंटरेस्टिंग स्पेस है और उसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये स्टोरी ये है कि गुरु गोबिंद सिंह के 2 बच्चों को वहां जिंदा हम्म चिनवा दिया जाता है सरहिंद के फोर्ट में। हम्म हम्म वहां का जो नवाब है, तो वो हम्म उनको दोनों बच्चों को जिंदा चिनवा देता है। तो अब जब ये चिनवाया जा रहा होता है तो मलेरकोटला का जो नवाब है, वो मुगल औरंगजेब को चिट्ठी लिखता है और कहता है देखो, मुगल और सिखों में जितना झगड़ा हो वो पॉलिटिकल है, इसमें बेचारे बच्चों का क्या कसूर है। हम्म। तो वो उसको पंजाबी में हादा नारा कहते हैं, कि हादा नारा देता, जिसमें मलेरकोटला का नवाब जो खुद मुस्लिम है और जो शेख हैदर की पूरी ट्रेडिशन से आते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं ये गलत है, ये जो भी तुम गलत कर रहे हो वो गलत है। पर जैसा हम जानते हैं, चिनवा दिया जाता है, बच्चे बच्चे दोनों मारे जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के बड़े बच्चे पहले ही मारे जा चुके थे सिख बैटल्स फाइट करते हुए मुगल्स के साथ। और जब गुरु गोविंद सिंह डाइज इन नंदेड़, हाँ, वो ही रिट्रीट्स टू नंदेड़ बिकॉज मुगल्स आर एक्टिवली परसुइंग इट। तो इस हाद नारे का जो सिग्निफिकेंस है, मैं वो उस पर बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा है, क्योंकि सिख हिस्टोरियोग्राफी कभी उसको एक्सप्लोर नहीं करती है, कि आज आप मलेरकोटला की श्राइन पे जाएं तो आपको सबसे बड़ी तादाद में वहां पर सिख और दूसरी बड़ी तादाद में हिंदुओं की दिखती है, और वो सबके सब हादा नारा याद करते हैं। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें शेख अहमद सरिंदी जो है इस तरह के मकतूबात के अंदर कमेंट्स कर रहे हैं, और जहां पर एक स्टेट द्वारा इंडाउ की गई बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, क्योंकि सरहिंद वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेवेन्यू टाउन, तो जितनी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पे बने हुए हैं वो स्टेट द्वारा एंडाउड है। और अगर आप सिख मेमोरी में देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब सरहिंद के फोर्ट पर हमला किया गया था बंदा बहादुर द्वारा, तो बाद में ट्रेडिशन बन गया कि उस किले की हर एक ब्रिक जो है मेमोरियल के रूप में सिख जो है लेके जाया करते हैं। आज वहां पर कोई ईंट नहीं दिखती है। नहीं पर नहीं उर्स, हाँ, तो बहुत बड़ा फेस्टिवल जिसको जोड़ मेला बोलते हैं वहां पर आज भी लगता है, और बहुत बड़ा पॉलिटिकल मेला होता है जिसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को प्रेजेंट करती है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। बट एट द सेम टाइम जब वहां पे उर्स होता है, तो सरहिंद के किले के ऊपर जो बनाया गुरुद्वारा है, वहां के सराय में मुसलमान आके ठहरते हैं, उनके लिए वहां लंगर लगाया जाता है ना। तो एक और बिल्कुल रेलवे लाइन दोनों को डिवाइड करती है, तो फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा और शेख अहमद सरिंदी की जी जो दरगाह है, जी जी रेलवे जी लाइंस को डिवाइड करती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो वहां पर मुसलमान वहां पर आकर स्टे करते हैं, जो विजिटर्स आके स्टे करते हैं उसी गुरुद्वारा, जो कि एक खास तरह की मेमोरी को डिपिक्ट करता है। तो जो आप कह रहे थे ना कि ग्राउंड से जो कल्चर निकल के आता है, जो एम्बेडेडनेस निकलता आता है, उसका बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। इट्स अ पॉलिटिकल हॉटबेड जिसमें एक खास तरह की मेमोरी को हमेशा डिपिक्ट किया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट फैक्ट। वही गुरुद्वारा उसी स्पेस के अंदर आप पिलग्रिम्स के आते हुए, और 3 दिनों में जब उर्स होता है वो शहर बदल जाता है, क्योंकि लाखों की तादाद में जो मुस्लिम जमात है वहां पर आती है। दुबई से आ रही है, सेंट्रल एशिया, पता नहीं कहाँ से, बांग्लादेश से, क्योंकि ढक्का के शायद नवाब भी वहां पर बरीड है, तो इसकी मेमोरी है आपको। बहुत सारे ऐसी बड़ी डाइवर्स हुजूम वहां पर आता है जिसको वो शायर अकोमोडेट करता है। तो उस दिन तो ऐसा लगता है जो शायर आज भी नॉन मुस्लिम ही है, 3 दिनों के लिए तो ऐसा लगता है। बट जो मेमोरी किस तरह से कॉम्प्लेक्स वे में सस्टेन होती है, वो आपने आई एम ग्लैड आपने वो मेंशन किया। इट्स वेरी रेलेवेंट टू मेंशन दैट। थैंक यू। Yogesh, I mean, I'm reminded of one more such shrine in Punjab, जिसका शायद किसी ने कमेंट में भी पॉइंट आउट किया है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ समाना. समाना में once again very near to Patiala, and there you have the shrines of Imamzadas, the sons of the Imams, the Shiite Imams, और जो उसका कनेक्शन है, और उसमें भी वंस अगेन मैं सिर्फ इसको स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा कि शिया इमामों की औलाद वहाँ दफन है, और कहा जाता है कि ये इमाम जाते हैं जिनको शिया मानते हैं, लेकिन योगेश जी वहाँ पे भी अगर आप विजिट कीजिएगा तो आपको शिया तो जाहिर है जाते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ
जो दूसरी कौमें हैं जो ज्यादा प्रीडोमिनेंस में नजर आती है, सिख एज वेल एज हिंदू, राइट। वो भी एक इस समाना के मज़ारात को एक पॉपुलर कल्चर में, एक पॉपुलर एक जगह पे वो एक टाइप की एक ऐसी तहजीब को जन्म देते हैं कि जहाँ के ऊपर जाके तमाम डिफरेंसेस मजहबों के मिट के और सब एक साथ अपने अपने तरीके से वहाँ के ऊपर वो करते हैं। और ये दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स which still persist in राइट। Punjab. And I mean, in fact, you also pointed out how within these Muslim shrines, the practices, for example, जो आप posters दिखा रहे थे, इनफैक्ट जो मैंने बात कही कि वो गुरुद्वारा आर्किटेक्चर से मिलते जुलते हैं यहाँ का, तो इनफैक्ट आपके एक पोस्टर को अगर आप तवज्जो कायदे से न दें तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी मुस्लिम श्राइन का पोस्टर आप देख रहे हैं। क्योंकि बहरहाल अगर वो सूफी को दाढ़ी के साथ दिखा रहे हैं तो वो तो दाढ़ी के साथ गुरुओं को भी दिखाया जाता है, तो नथिंग स्पेशल। तो जैसे ही आपने उसे दिखाया तो पहला इंप्रेशन मेरा ये था कि शायद आप कुछ सिख कनेक्शन के बारे में बता रहे हैं। देन आई रियलाइज कि ये तो कुछ नहीं, ये सूफियों को दिखाया गया है, उनकी श्राइन को दिखाया गया है। तो दैट इटसेल्फ, इवन द आर्ट जो पोस्टर आर्ट है वो भी एक मिली जुली वहाँ पर वो पोस्टर आर्ट भी नजर आ रही है। एंड वो भी एक चीज है कि जो शायद हम लोगों को याद रखना चाहिए। Now, I would take up a question by Mr. Ali Haider. Sir, can you suggest some books that explore Muslim mosques, shrines, monuments, and other heritage in post-partition or pre-partition Indian Punjab? Amardeep Singh has written a wonderful book, Lost Heritage, The Sikh Legacy in Pakistan. I wonder whether same type of work is done for Muslim heritage in Indian Punjab. जी, ऐसा इसके ऊपर बहुत खूबसूरत काम और एक नहीं कई काम किए हैं डॉक्टर सुभाष परिहार ने, जो कोटकपूरा में बेस्ड एक हिस्टोरियन है। तो उनकी कई किताबें हैं, जिसमें एक किताब का तो नाम मुगल इंपीरियल हाईवे है, जिसमें वो पूरी की पूरी जो उस पूरे हाईवे के ऊपर सराय, दरगाहें, मॉस्क्स, उनकी उनके उनको डॉक्यूमेंट करते हैं। इनफैक्ट मुस्लिम रिलीजियस स्पेसिस पे भी शायद उनकी किताब है, मुझे एग्जैक्टली टाइटल याद नहीं है। सरहिंद के ऊपर उनकी एक पूरी किताब है जिसमें सरहिंद के सारे जो रिलीजियस स्पेसिस है उसको डॉक्यूमेंट करते हैं, उसकी हिस्ट्री लिखते हैं। तो और खास बात यह है कि उनमें डिजाइन्स हैं, प्लान्स हैं, बिकॉज उनकी ट्रेनिंग एज इंजीनियर भी थी, तो बहुत खूबसूरत डिजाइन्स एंड प्लान्स भी बनाते हैं। हिस्ट्री की उनकी खास ट्रेनिंग है, तो वो सारे डायमेंशंस को, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग प्लान्स, उनकी हिस्ट्रीज, उनमें इंस्क्रिप्शंस उनके, और सब बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट करके वो डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो आप डॉक्टर सुभाष परिहार की जो किताबें हैं उनको प्लीज कंसल्ट कर सकते हैं। ही वेरी रिस्पेक्टेबल हिस्टोरियन एंड वेरी साउंड स्कॉलर। Thank you. Before we take up another question, या चलिए पहले मैं बाद में फिर अपना करूंगा। यू हसन, is the word urs, the celebration of death anniversary of a Sufi saint, a corruption of the word urus, bride, and urusi, wedding? A Sufi is a lover of God, and hence his death is believed to be a mystical union with God and celebrated like a wedding. Urs is indeed a wedding. It's a day of celebration of wedding. So it's very obvious कि उसकी celebration भी, चाहे वो death anniversary है, it's celebrated as death of wedding with God. So you're absolutely right. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पर वो करप्शन वाला जो मसला है ना, वो मैं थोड़ा सा उसमें कम विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो आम व्यवहार है वो करप्शन में विश्वास उतना नहीं करता है ना। उसके लिए जो फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है किसी भी टर्म का, वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने अपनी किताब में इस बात का ध्यान रखा था कि मैं जो लोकल एक्सप्रेशंस हैं, मीडियम हैं
इन स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्सप्रेशंस के उनको इस्तेमाल करूं। तो मैं इसलिए बरकत कहता हूं उसको, है ना, बरका नहीं कहता हूं, है ना। तो बरकत है। अब आप उसको करप्शन कहें या मैं कहूं कि वो सोशल एक्सप्रेशन है, वो डिस्टिंक्शन मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता। मेरे लिए जो लोकल एक्सप्रेशन है वो उतना ही सिग्निफिकेंट है जितनी की टर्म्स और उनकी इटिमोलॉजीज। हाँ तो आप सही बिल्कुल। कह रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है कि उर्स का मतलब ही वेडिंग सेरेमनी, जो आप उर्सी जिसकी बात कर रहे हैं, तो उसी से उर्स। और ये करप्शन नहीं है, दिस इज अ टर्म जो सूफियों ने यूज किया और बाद में फिर तकरीबन हर मिस्टिकल सर्कल्स पे ये आता गया और दोनों तरफ ये इस्तेमाल किया। इसी तरह मैं आपसे पूछना चाहूँगा योगेश के, आपने एक स्लाइड में बड़ा चौका दिखाया, चौकी या चौका, यस यस। आ, जिसके ऊपर जाहिर है कि एक रेस टेबल टाइप की है, जो प्लेटफॉर्म है या जो भी है, विद सर्टेन फोटोग्राफ्स विच आर kept there, उसी बरका के लिए या बरकत के लिए उनको रखा गया है। लेकिन उनके सामने नज़र, आई मीन फ्रूट्स एंड स्वीट्स, उसमें शायद अगरबत्ती या लोबान भी जल रहा है। राइट। ना इस चौका और चौकी, ऑलमोस्ट यही कंसेप्ट जो शिया कम्युनिटी है, या शिया ना कहिए उसे, आप ये कहिए कि दोस्त हु कमेमोरेट मुहर्रम, उनमें भी बहुत ज़्यादा ये नज़र आता है। इनफैक्ट लार्ज नंबर ऑफ सुन्नी मुस्लिम्स इमाम चौक प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और प्लेटफॉर्म जिस पे ताज़िया मुहर्रम में रखा जाता है, उसको भी भरते हैं। भरना कहते हैं उसे, कि जहाँ ऊपर फ्रूट्स एंड स्वीट्स और दूसरी चीज़ें ला के रखी जाती हैं, और उस पर सूफियों के वो रखे जाते हैं, या तावीज़ रखी जाती है, और उस पर दुआ और वो मांगी जाती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो टर्म वहाँ चौक इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये ट्रेडिशन, इसके पीछे जो उसका रूट्स हैं, वो भी कोई नॉन इस्लामिक कल्चर से डिराइव्ड है, या इस्लाम से यहाँ तक पहुंचे? एनी आइडिया ये कहाँ का ये? देखिए, चौक जो टर्म यूज की जा रही है, चौकी जो टर्म यूज की जा रही है, वो चौकी का बेसिकली रेफरेंस जो हम वो पुराने हम यूज करते हैं, पाटा जिसको कह देते हैं ना, बैठने की जगह छोटा सा पाटा, है ना। तो चौकी की जो एटिमोलॉजी देखें तो वो टर्म चौकी है कि जहाँ पाटा रख दिया, जहाँ बैठ गए हैं। पर चौकी का एसोसिएशन जो है एक्चुअली पोजेशन से है। तो होता क्या है कि और ये पोजेशन जो नैरेटिव्स आप जानते हैं, माताओं की श्राइन पे भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हालांकि जो पोजेशन सर्कल और साइकिल है, उसमें आप पीर आपको पोजेस कर रहे हैं। तो पीर की पोजेशन में क्या है, तो जो मैं आपको बता रहा था, डॉक्टर दर्शन पाल और जो दूसरे और इंटरमीडियरीज हैं, तो जिस समय वो चौकी लगाते हैं एवरी थर्सडे को वीकली, तो दे गेट पोजेस्ड बाय Sheikh Heather, and then they become intermediary between the devotee and the peer. So that is an interesting sight altogether, है ना, कि आप उसमें किस तरह से एक हिंदू इंडिविजुअल को, और जो आप हिंदू में भी मैं क्वालिफाई कर रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि हम जानते हैं हमारी हिस्टोरियोग्राफी में अर्बन मिडिल क्लास हिंदूज को किस तरह से प्रेजेंट किया जाता है ना। तो वो मैं खासतौर पे इसलिए वो क्वालिफाई कर रहा हूँ, जो कि अग्रवाल समाज से है। ही इज गेटिंग पोजेस्ड बाय अ सूफी सेंट, और उस पोजेशन के रिचुअल के अंदर जो है, जो पोजेशन का जो रिचुअल उसको चौकी बोलते हैं यहाँ पर। अब मैं क्योंकि शिया कल्चर के बारे में उतना नहीं जानता हूँ, बट उसका फॉर्म ये है, और ये सारी फॉर्म आपको बिल्कुल उसी तरह से, आपको जो देवी श्राइन्स है हिमाचल के अंदर, आप वहां चले जाएं, वहां पर भी आपको इसी तरह से वो टर्म वही यूज हो रही है, चौकी, है ना। तो जहां पर गॉडेस आपको पोजेस करती है, खासतौर पे वीमेन को पोजेस करती है। और इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीर जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, पीर जो है वुमेन को भी प्रोसेस करता है। अगर आप हैदर शेख मलेरकोटला की श्राइन पे जाएं, तो वहां पर आपको पोजेस्ड वीमेन भी दिखेंगी, पोजेस्ड मेन भी दिखेंगे। तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वहां फॉलो नहीं होता है। पर शायद देवी जो है, परहैप्स जहां तक मेरी समझ कहती है,
वो विमेन ही उनसे पोजेस होती है। बट ये इंटरेस्टिंग है। बट वो शिया कनेक्शन जो है, आई एम नॉट रियली श्योर, मतलब क्योंकि मेरे पास उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। बट नॉन शिया कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम कहें, इस तरह की प्रैक्टिसेस पंजाब में परमिएट करती हैं। Right, and you, Asan Saab, you are quite correct that uh, uh, उर्स का जो ओरिजिन ऑफ द वर्ड है वो वही उरूसी से ही निकला है. Yes, it is very popular in India, and the root is an रे सी, it's उर्स, और वहीं से ये डिराइव हुआ. योगेश जी, we will take the last question. Uh, what are Muslim shrines that were famous in Muslim ruled princely states before 1947 in Indian Punjab, like Maler Kotla, Loharu, Dujana, and Todi? And which shrine is most famous? और मैंने इसको अभी मैं एक चीज इस पे और मैं ऐड करूंगा कि जब आप इतना कर रहे हैं तो ये बताइए कि जो सूफी श्राइन्स बहुत पॉपुलर थे बिफोर पार्टीशन, क्या वही श्राइन्स आज भी पॉपुलैरिटी में है या इमरजेंस कुछ दूसरे टाइप का हुआ है? अगर शिफ्ट हुआ है तो कौन से श्राइन्स का या कौन सी चीजों का ट्रांसफॉर्मेशन अब नहीं है और या अब है, वो भी आप साथ में. देखिए, जो मैं उदाहरण दे रहा था, एग्जांपल्स दे रहा था, वो शेख हैदर के। शेख हैदर एक्चुअली पेट्रन सेठ जो है मलेरकोटला के ही हैं। उन्होंने टाउन एस्टैब्लिश किया। उनके नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दो किताबें रेफर कर सकते हैं। एक तो वहाँ के जो लास्ट नवाब ने लिखी थी मलेरकोटला के ऊपर ही किताब, वो आप रेफर कर सकते हैं। और दूसरी एक रिसेंट किताब जो थी, जो लिखी गई थी मलेरकोटला के ऊपर, वो एक अमेरिकन स्कॉलर ने लिखी है, एना बिगलो। तो आप उस किताब को भी रेफर कर सकते हैं। तो मलेरकोटला की श्राइन एक्चुअली पंजाब के अंदर सबसे यूनिक श्राइन है। यूनिक इसलिए है क्योंकि ये ऐसा शहर है जो पार्टीशन से उस तरह से अफेक्ट नहीं होता है जैसे कि बाकी शहर होते हैं। ये प्रिंसली स्टेट थी, और इस स्टेट की जो बाउंड्री है वो बहुत भयंकर वायलेंस से जुड़ी हुई है, उसकी मेमोरी। क्योंकि इसके बगल में लगता था पटियाला स्टेट। तो पटियाला स्टेट और मलेरकोटला स्टेट के बारे में अजय भारद्वाज ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी बनाई है, तो जिसमें अगर आप उसको ध्यान से पढ़े और सुने तो आपको पता चलता है कि जो माइग्रेटिंग मुस्लिम पॉपुलेशन है, जब वो पटियाला से भाग रहे, क्योंकि पटियाला के महाराजाओं ने बहुत मैसेकर्स करवाए और वहाँ के पहलवानों ने बहुत मैसेकर्स किए, क्या, क्योंकि ये जो फियर था कि कौन सा पार्ट जो है पाकिस्तान में चला जाएगा। बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी विलेजेस और कस्बे इन इलाकों में हुआ करते थे। तो जो आउटगोइंग मुस्लिम पॉपुलेशन थी, स्टोरी ये है कि जब वो मलेरकोटला में घुस जाया करती थी, फिर वो सेफ हेवन में पहुंच जाती थी। और इंटरेस्टिंगली सबके बावजूद मलेरकोटला के नवाब ने ये डिसीजन लिया कि वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो वो जो किताब है, उनके आर्टिकल्स, एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल है बिगलो का, जिसमें टाइटल ये है कि मुस्लिम हु रिफ्यूज पार्टीशन। तो मलेरकोटला की श्राइन आज भी वहाँ के जो फैमिली मेंबर्स सरदार निशीन्स हैं, जिनको खलीफा कह रहे हैं, उन्हीं के ही कंट्रोल में है, वही उसको रन करते हैं। और ये वो ऐसी श्राइन है जिसमें, और पंजाब की सबसे पॉपुलर श्राइन में से है, जिसकी अनब्रोकन हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूटी। सो पार्टीशन, एक तरफ तो हम ब्रेक्स की बात कर रहा हूं, तो मैं कई एग्जांपल्स में ब्रेक्स की बात किया। सेकंड एग्जांपल पीरखाना में मैंने ब्रेक की बात किया। बट ये वो ऐसी श्राइन है जहां पर आपको कोई ब्रेक नहीं दिखता है और वो कंटिन्यूएशन दिखता है, जिसको आप आज पंजाबी मुस्लिम कहते हैं, वो आपको सिर्फ मलेरकोटला के होते हैं। बाकी पंजाबी मुस्लिम पाकिस्तान के अंदर होते हैं ना। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है, और ये एग्जांपल मैं आपको खासतौर पर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इट स्टिल कंटिन्यूज टू बी वाइब्रेंट। और सरहिंद का एग्जांपल देके ही वो एग्जाम्पल साथ में जुड़ता है ना, कि वो एक कैसी वायलेंट मेमोरी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ सरहिंद की मेमोरी है और एक तरफ पार्टीशन की मेमोरी है, और दोनों में मलेरकोटला शहर जो है बड़ा टॉल स्टैंड करता है ना उसकी। और वही शायद बुनियाद है आज भी सूफी श्राइन्स की कंटिन्यूटीज की, वो मेमोरी उसकी बुनियाद है। एक बार फिर मैं योगेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. यू नो, व्हेन आई फर्स्ट heard your lecture years ago in the beautiful Viceregal Lodge, you know, I saw a young man, a handsome young man, uh, wearing a Himachali cap,
And in fact, हम लोग की पूरी अटेंशन इन्होंने अपनी तरफ ड्रॉ कर ली थी. And fascinating. And today also, I mean, you gave us details which each and every Indian should be uh, reminded and should know. I would like to just end by adding just one small thing to that, and that is that Punjab, the land of these shrines, which are still flourishing, is also the land where you find that pre-partition, a large number of pre-partition mosques turned into barn houses. राइट. उसी सरहिंद में थोड़ा सा शेख अहमद सरिंदी की दरगाह से कुछ किलोमीटर आगे, सदना जहाँ कसाई की पर मस्जिद. एक गांव के पास दो मुगल मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, और उस गांव की मस्जिद जो है वो आज किसी और चीज में तब्दील है, विद ऑल कैलीग्राफी. कोई खास बात नहीं है, पाकिस्तान में भी यही हाल है. मैं तो डोंट थिंक कि मैं किसी एक को अक्यूज कर रहा हूँ, दोनों तरफ यही है. व्हाट इज रिमार्केबल हाउएवर इज कि मॉस्क्स तो कन्वर्ट हो गई इनको समथिंग एल्स. आज उनको देखने वाला कोई नहीं. लेकिन उन्हीं शहरों में जहां के ऊपर जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स, मुस्लिम इनहैबिटेंट्स थे, उनके जाने के बावजूद जो ये एक मिस्टिकल कल्चर जो डेवलप हुआ, जो हिंदुस्तानी कल्चर डेवलप हुआ था, वो मस्जिदों और मंदिरों में नहीं, इन दरगाहों में, इन जगहों के ऊपर जहाँ के ऊपर एक कॉमन हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे किसी मजहब का हो, जहाँ आके वो सदियों से इंटरेक्ट कर रहा था, आज भी वो इंटरेक्शन उन उस जगहों पे कायम. वी रिमेम्बर के पंजाब इवन आफ्टर पार्टीशन कहाँ कहाँ से गुजरा, खालिस्तान मूवमेंट, भिंडरान वाले, दिस दैट. लेकिन आज भी ये जो शेयर्ड स्पेसेस हैं, ये आज भी वैसे ही फ्लरिश कर रही हैं. और जैसा कि वहाँ जाके पता चलता है कि समटाइम्स वहाँ की जो क्लाइंटील है वो थोड़ा सा बदल गया है, या हो सकता है ना बदला हो. अब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों के हाथ में रहा हो, क्योंकि इवन इसके अलावा भी जो सूफी श्राइन्स मिलते हैं वहाँ आज भी हिंदू और मुसलमान एक साथ, आप यहाँ तक के जो सूफी लिटरेचर है या भक्ति लिटरेचर है उसको पढ़े तो वहाँ पे भी कोई डिफरेंस मजहब का नहीं समझ में आता है. तो आई थिंक एक कंटिन्यूटी है जो उस पर नज़र आती है. और वही एक चीज़ ऐसी है कि जिसको हम कह सकते हैं कि भले उसमें अंधविश्वास भी साथ साथ उसके चल रहा हो, लेकिन अभी भी एक कॉमन थ्रेड के लिए, एक कॉमन कल्चर के लिए वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनस्बत वो फंडामेंटलिस्ट ट्रेडिशंस जो हमें अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और एक दूसरे को मारने और काटने पे मजबूर. आई थिंक कि जो आज का आपका प्रेजेंटेशन था, दैट वाज अ गुड फिनाले to our programs. Thank you very much. Yes. In the sense that, yes, every good thing has to end. जब से पैंडेमिक शुरू हुआ था, हम लोगों ने कॉन्स्टेंटली इस लेक्चर सीरीज को शुरू किया. इनफैक्ट लास्ट ईयर, at a time when the pandemic was raging like anything, Asha and Ganga Jamni were holding 2 lectures per week.
लेकिन जब हालात इतने बिगड़ गए थे कि मोस्ट ऑफ अस हैड फॉलन इल, और वो एक बड़ा अजीब सा लग रहा था कि लोग सफ़र कर रहे हैं और हम लोग बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वी हैड टू क्लोज दीज प्रोग्राम। लेकिन जब उस सेकेंड वेव का प्रकोप कम हुआ था, so we came up with a second rendition of these lectures, Asha Gangajam. And in this series, once again, we had a number of lectures, number of talks, uh, discussions on books. But now that our educational spaces are opening up, Delhi University, Jamia, Aligarh, रफ्ता रफ्ता जितने भी हमारे एजुकेशनल स्पेसेस हैं वो दोबारा से खुल रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्कॉलर्स हो जिनको हम यहाँ आपके सामने रोज हर हफ्ते एक बार लाते हैं, वो सब अब दोबारा से अपने कामों में मसरूफ हैं। The Aligarh Society of History and Archaeology now resolves that जो हमारे लेक्चर सीरीज अब तक रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे एवरी सैटरडे, now we would be holding lectures which are not regular. कुछ दिन का तकरीबन एक महीने का we will give a gap, and after a gap, a month or so, possibly in April, we would try to come back with a new set of speakers and topics. Let me take this opportunity to thank each and every one of you जिसने इन प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाया। हर हफ्ते लोग हमसे जुड़े, और जो लाइव नहीं जुड़ पाए, सैकड़ों की तादाद में उन्होंने जो हमारे YouTube के ऊपर जाके लेक्चर्स ये पढ़ते हैं, उनको लोगों ने देखा, अप्रिशिएट किया, समझा, और यहाँ तक के लेक्चर्स होने के बाद भी उनकी क्वेरीज वो मेरे पास मेरे इनबॉक्स पे आती। So I thank each and every one of you. I also thank our co-host Shagufta Siddhi of Ganga Jamni Heritage, who provided this platform to Aligarh Society of History and Archaeology कि हम लोग इन लेक्चर्स कर पाए। और ये जो कोलैबोरेशन रहा गंगा जमनी और आशा का, इट विल कंटिन्यू, लेकिन कुछ दिन के ब्रेक के साथ। तो आई एम थैंकिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड नाइट, गुड विशेस, टेक केयर। यूनिवर्सिटी जाइए, अपने क्लासेस अटेंड कीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो, कोई थीम्स आपको समझ में आ रही हो जिससे आप चाहते हो कि और लेक्चर कराए जाएं या और टॉक्स कराई जाएं या कोई बुक रिव्यूज कराए जाएं, तो डू अप्रोच अस। वी आर ओपन टू सजेशंस, और हम आपके थीम को ज़रूर अपने नेक्स्ट एडिशन में इंक्लूड करेंगे। थैंक यू, गुड बाय। Thank you very much.